इसीलिए कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 50 रुपए दे रहा हूँ। इस 4 दिन की कच्छ के सफ़र का दूसरा दिन शुरू हुआ एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ। सनसेट के जितनी ही खूबसूरत वाइब हमें अर्ली मॉर्निंग सनराइज को देखकर मिली एट द वाइट रन। जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल था, पर आई एम ग्लैड वी डिड सो एंड एंजॉयड दिस स्पेक्टेकल। Just enjoyed a beautiful morning. हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, अबाउट 6:30 के आसपास। 7:15 को सनराइज हुआ। Because we went on a full moon night, we were lucky to witness the moon to the west and the sun to the east over a white desert. It's not every day that you can witness such moments in life, and I am glad we were lucky to do so. Last evening, had a bad incident. My shoes are still wet. Land was too marshy where I stepped, and the whole shoe went into the gutter. The sunrise was beautiful. And as is with sunrises, half of us were asleep when the sun rose. So Vivek, Rishi and Atman didn't come. Poopers. And one thing I'm really disgusted by is look at the trash. Look at all this trash, and it's as far as I could see. Super sad that such a beautiful landscape people are still ruining. There are plastic bottles, polythene bags, waste, trash thrown all over. White salt plains को बाय बाय बोल के हम आगे निकल पड़े टू एक्सप्लोर द नेक्स्ट पॉपुलर स्पॉट ऑफ कच्छ। अब आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला था क्योंकि हमने हमारी आइटिनरी ज़्यादा ही पैक्ड रखी थी। We visited almost 5 destinations and traveled almost 250 kilometers plus in just one day. रन ऑफ कच्छ से कालो डूंगर तक पहुंचने का रास्ता इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ थ्रिल्स फॉर 2 रीजंस। पहला तो आप देख ही सकते हैं कि इस रास्ते के नज़ारे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है एंड एक प्योर डेजर्ट एडवेंचर का फीलिंग दे देते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इवन मोर माइंड ब्लोइंग, द मैग्नेटिक हिल। अरे भैया मैं Okay, so there is a board here that's called Magnetic Field Area, and it's claimed that the car, instead of going down the slope, goes up the slope. You know, I'm thinking about car. Okay, I can imagine that, but even water goes up. Till date, I thought it's just an illusion or a perceptionary thing, but I'm not kidding you. We legit went up the slope. The car was in neutral. The driver was out of the car and the car was going up. This is neutral. डर गए थे बाप रे, तुझे पता नहीं Oh shit. Look at the road. It's going down, but we came up in neutral, in reverse. It was kind of surreal. I mean, you don't believe it until you like experience it, but yeah. क्या नाम है आपका? आपका? ये भी कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। Okay. कालो डूंगर के टॉप पर पहुंचते ही आपको एक फ्ली मार्केट जैसा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। कुछ शॉप्स थी जो कलरफुल कच्ची सामान बेच रही थी, कैमल राइड्स, लोकल स्ट्रीट म्यूजिशियंस एंड फूड स्टॉल्स। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं टू द व्यू पॉइंट ऑफ कालो डूंगर। There are hills, and this is the highest point of Kutch, and then it's all white run and the salty waters all around.
Such a beautiful place. कुछ बोल हेलो हेलो वाला इफेक्ट एको धीरे बोला। आप अपना नाम बोल, अपना नाम। तारण। चूतिया चूतिया चूतिया। गंदा काटा गंदा। ऊपर से आपको एक कंप्लीट पैनोरामिक व्यू मिलता है ऑफ द एंटायर वाइट सॉल्ट डेजर्ट ऑफ कच्छ एज फार एज द आईज कैन सी. The view truly felt beautiful and makes you believe just how beautiful the landscape of Kutch is. पता नहीं जी कौन सा नशा करता दिल दीवाना लगता है। काला डोंगर से करीब 12 बजे हम निकल पड़े वापस टुवर्ड्स सम सिविलाइजेशन एंड द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी. We have reached the coastal city of Mandvi in Kutch. मांडवी अपने पैलेस और बीच के लिए फेमस है, पर हम इतने लंबे दिन के बाद जिस चीज के लिए मोस्ट एक्साइटेड थे वो था खाना. ऑथेंटिक गुजराती थाली का एक्सपीरियंस लेने हम पहुंच गए टू द फेमस केसरिया लॉज. एंड यहाँ पर अंकल ने जिस प्यार से हमें खाना खिलाया है उसके बारे में तो अब क्या ही बोले आप. पेट भर गया था एंड नींद बहुत ही आ रही थी और धूप ज़्यादा ही लग रही थी, पर हमारे पास मांडवी एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक दिन था, तो बिना आलस करे हम चल पड़े टुवर्ड्स द पैलेस. This is the palace gardens of the Mandvi's palace, the Vijay Vilas palace. Built almost 110 years back as a summer home to the Jadeja Maharao of Kutch. Vijay Vilas Palace, even though the home of royal family, is open to tourists for a visit where you get to see some glimpses of the royal life. The entrance ticket is rupees 50 per person, and the palace also has a beachside luxury accommodation for travelers looking for a royal stay. This place is a fusion of various Indian and European architectural styles. आपको राजपूत आर्किटेक्चर, बंगाली डोम स्टाइल्स एंड कच्ची आर्टिसन वर्क्स की ग्लिम्सेस मिल जाती है throughout the palace. The terrace on top offers a beautiful view of the landscape around, and the architectural style gives you a pleasant, cool sea breeze while being out in the open. The palace has been used for filming scenes from Hum Dil De Chuke Sanam, Lagan and Commando movies. तो अगर आप कच्छ आ रहे हैं अगली बार तो मांडवी के विजय विलास पैलेस की मुलाकात तो ज़रूर लेकर जाइए. दिन की शुरुआत हमने वाइट सॉल्ट डेजर्ट से करी थी और अब दिन को एंड करने वाले थे ऑन द ब्यूटीफुल सी शोर ऑफ मांडवी. एक ही दिन में हमने नेचुरल वंडर से लेकर मैन मेड स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर कर लिया था, एंड नाउ इट वाज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय द ओशन विंड ऑन आवर फेसेस. Mandvi beach has recently become quite popular in Gujarat. The beach has seen a good influx of tourism development and also brought in a lot of vendors catering to the tourists. You will find many beach resorts in Mandvi and also a lot of things to experience at this beach. Although not very ideal for swimming, पर इस beach को definitely आपकी itinerary में
इंक्लूड करना ज़रूरी है। एक बेहतरीन शाम मांडवी में बिताने के बाद हमारा टाइम हो गया था आगे निकलने के लिए। हम रात गुजारने वाले थे इन द सिटी ऑफ भुज एंड द नेक्स्ट डे वी वर गोना गेट एन अर्ली स्टार्ट टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द सिटी। विवेक भाई, कैसा था आज का दिन? Bro, आज तो इतना मजा आया यार। We had to take a break from eating Gujarati food for 2 days, so we are back to Much needed break. आगे की कहानी आती है अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके रखिए सो यू गेट दी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू।